Now class 9, today we are going to start our next chapter and that is about nutrition. We have learned a little in the physical class. In the physical last 2 days class, we have learned the introduction. What is introduction? The process by which organisms obtain and use the nutrients required for their maintaining of the life is called nutrition. Essential substances that our body needs in order to grow and stay healthy are known as nutrients. There are two processes by which food is obtained or prepared, such as autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. First of all, what is autotrophic nutrition? Auto means self. It is a mode or the method of nutrition in which an organism makes its own food from the simple inorganic materials like carbon dioxide, water, minerals present in the surrounding with the help of energy. These processes are photosynthesis or either chemosynthesis. In my class, I told you auto means self, trophic means to prepare. Life exists in our planet in two forms, in the form of plant or in the form of animals. Mostly the plants, they are green in color, and due to presence of the green color, which is called chlorophyll, they can manufacture their own food. They take raw material from their surrounding, that is the plant, they absorb water and minerals from the soil, they take carbon dioxide from the air, surrounding air, they take energy from the sun rays, and the chlorophyll is the substance which enable to trap, which make the sunlight or which use the sunlight or which trap the sunlight for this process. And the name of this process is photosynthesis. Is it clear? Next is the heterotrophic mode of nutrition. Hetero means different. It is a mode of nutrition in which an organism can't make its own organic material but depends on other organisms for its food and use it for the growth and the energy. You know, every living organism, they grow, and for their growth they need energy. And this energy, it comes from the food. And the food, whichever is suitable food for them, that is called the nutrients. Nutrition is the study of nutrients in food. How the body uses nutrients and the relationship between diet, health and the disease. न्यूट्रिशन इज अ वास्ट टॉपिक. न्यूट्रिशन एक बड़ा टॉपिक है. इसमें हम सिर्फ ये नहीं बताते कि कौन से न्यूट्रिएंट्स है, बल्कि those nutrients which are hidden in that food, how they are helping or how they are healing and how they are helpful in the growth of the body. Now the nutrition in plants. Plants and animals do not obtain food by the same process. Plants are other things and the animals are other group. Their way of feeding is different. Now Adil Ansari, Khatija Razak, let me know. Can you hear me? The net is proper running, because in my side it is showing error. Just tell me quickly whether your side is clear, you are getting my lecture, you are getting my voice. Khatija and Adil Ansari, write it quickly. Arisha, Adil Ansari, Khatija, okay, you are getting, okay. I restart. Now, the nutrition in the plant. Plant and animals do not obtain food by the same process. Plants are rooted, they are fixed in one position. And
their growth is unlimited. But animals, they move from one place to the other place. Their habitat or the places of livings are different. Some are found on the land, some are in the desert, some are found in the water, and some are found on the air, in the air. So that is why their way of feeding or their obtaining food processes are different. Plants and some bacteria have the green pigment called chlorophyll. Some bacteria, which are the lower organism, bacteria lies somewhere in between animals and plants. So some bacteria, they have green pigment and this is called chlorophyll. So they can synthesize the food. Remember one thing, anything which has chlorophyll, it can perform the process of photosynthesis. While animals, fungi, and other bacteria depend on the other organism for their food. And this is based on this, there are two main mode of nutrition, autotrophic and heterotrophic. That is the reason we have two type of nutrition. One is called autotrophic nutrition. This is the revision in the physical class I told you. This picture I draw on the board. मैंने आपको ये picture board पे draw करके बताई. First of all, come to the definition. The term autotroph is derived from two Greek words. Autos means self and troph means nutrition. In autotrophic nutrition, an organism makes its own food for the simple raw material, and this process is called photosynthesis. Now, what is photosynthesis? Green plants, which are autotrophs, autotrophs mean they can synthesize their food through the process of photosynthesis. Photosynthesis is a process by which green plants, algae, and some bacteria, they synthesize chlorophyll synthesize the simple sugar, that is glucose, from the simple raw material, that is water and carbon dioxide, by using the energy of sunlight. Oxygen is released in this process as a byproduct or a waste product. This is utilized by the living organism for their respiration. The overall equation of photosynthesis is 6 molecules of carbon dioxide when they combine with 12 molecules of water in the presence of sunlight and chlorophyll. C6H12O6, that is the glucose, is formed, some water vapors are formed, and oxygen is released in this process. Now come to this diagram, figure 8.2. This water is a raw material. It is inorganic in nature. It is obtained by the plant or it is absorbed by the plant through the root from the soil. This water comes from the soil. Now the next thing is carbon dioxide. Carbon dioxide is present all around this tree. इस tree के आसपास air मौजूद है which contain carbon dioxide. This carbon dioxide, by the process of diffusion, it enters into the green leaf. Now these two substances, that is the water and carbon dioxide, they will combine in the presence of sunlight, which is coming through the sun, and the chlorophyll. The sunlight and the chlorophyll, they are essential factors. In the presence of sunlight and chlorophyll, carbon dioxide combines with water, and the result of which glucose is formed. Inside the leaf, glucose is synthesized along with some water vapor and the molecule of oxygen. This oxygen is given out, it is released into the air through the open stomata. This is called autotrophic mode of nutrition or the process of photosynthesis. Now, heterotrophic mode of nutrition, the word hetero is derived from the two Greek words. Heteros mean other and troph mean nutrition.
Unlike the autotrophs, which manufacture their own food, heterotrophic organisms obtain food from other organisms. As heterotroph depends on other organisms for their food, they are also called consumers because they are consuming the food of other living organisms. हीट्रोट्रॉपिक एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया है, दो वर्ड से मिलकर बना है। हीट्रोस का मतलब है अदर एंड ट्रॉफ्स मीन न्यूट्रिशन, और ये ऑटोट्रॉफ के मुकाबले में अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते, तो ये किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनके पास हमेशा फूड हासिल करने के लिए कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है। द ऑर्गेनिज्म में बी आ डेड और द लिविंग होस्ट, उनका होस्ट जो है वो डेड भी हो सकता है और लिविंग भी हो सकता है। इसी बेसिस पर इनको कंज्यूमर भी कहते हैं। कंज्यूमर जो किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो कंज्यूमर कहलाते हैं। और एनिमल्स नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक द फंजाई कम अंडर दिस कैटेगरी। वो तमाम पौधे, वो तमाम प्लांट जिनमें कुछ बैक्टीरिया भी शामिल है और फंजाई भी शामिल है, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, वो हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। हीट्रोट्रॉफ्स को हीट्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं और कंज्यूमर्स भी कहते हैं। Consumers which consumes herbs and other plants are called herbivores, and those which consume animals are called carnivores. After taking complex organic material as food, heterotrophs break them into simple molecules with the help of biological catalysts that are enzymes, and utilize them for their own metabolism. Now these consumers are of different type. इनकी जैसी ग़िज़ा होती है उस हिसाब से कंज्यूमर को डिवाइड किया है। आप पिछली बुक में इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड herbivores, those organisms which depend, those living things which depends on herbs or the green plant, they are called herbivores. जो कि पत्ते, पौधे, प्लांट, सीड खाते हैं, उनको हम herbivores कहते हैं। And the other animals which eat the flesh of other animals, the raw meat of other animals, they kill them and they eat their meat. These are termed as carnivores. उनको हम carnivores कहते हैं। But some animals which are not mentioned here, they eat both the herbs and the meat. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हर्ब या हर्ब से आने वाली चीज़ों को भी यूज करते हैं और गोश्त पका हुआ या कच्चा भी खाते हैं। These are called omnivores. Omnivores eat both the herbs, plants and the meat of other organisms, just like human being, bear, crow. These things, they eat herbs as well as the meat of other animals. Like human being, we eat vegetables, we eat fruits, we eat grains, and they are the product of plant. So in this way, we are herbivores, and we also eat the meat of fish, cow, goat, meat, mutton, beef, fish. So we are also carnivores. So we have two qualities. So the human beings are termed as omnivores. Depending upon the mode of living and the mode of intake of food, heterotrophs may be parasitic, saprophytic, or holozoic. Now, what is parasitic? Parasitic organisms और the parasite, जो parasite होते हैं, उनको हम parasitic और nutrition, उनका mode of nutrition parasitic कहलाता है। Live on or inside other living organisms called host and obtain their food from them. The host does not get any benefit from the parasite. This mode of nutrition is called parasitic nutrition. Different parasites like Cuscuta,
Akash bale, hookworm, tapeworm, leech, etc. have different mode of feeding depending upon habit and habitat and the modification. Now, what are they telling? They are telling that some organisms, they obtain food from other organism, and that organism is called their host, right? And these are who are taking the diet from the other organism, they are called parasite. We have two type of parasite, endoparasite and exoparasite. If they are living on the surface of their host, it is called exoparasite. If they are living inside the body of their host, they are called endoparasite. Is it clear to all of you? हमारे पास पैरासाइट दो तरह के होते हैं. वो पैरासाइट जो अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर की सतह पर रहते हैं उसको एक्सो मीन आउटसाइड, उनको हम एक्सो पैरासाइट कहते हैं. एंड दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट दे आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट. इनको हम एंडोपैरासाइट कहते हैं. Here is the example of exoparasite, that is the Cuscuta. Cuscuta is a plant. It is found on the plant of berry ziziphus miliaria plant. बेल का जो पौधा होता है उसके ऊपर ये एक बेल चढ़ी हुई होती है जिसको आकाश बेल कहते हैं. This Cuscuta, it takes the food with the help of special roots present in them, and these special roots are called haustoria. These haustoria, they penetrate deep into the plant body and they suck the ready-made food. Second one is Cassitha. Cassitha is also found. It is a bale. It is just like Akash bale. It is found on some green plant. Now this is the leech. Leech is a member of annelid. You have studied the annelid. आप annelid पढ़ चुके हो, इससे पहले आपने annelid पुरानी बुक में पढ़ा हुआ है. This is the leech. It has suckers. It penetrates deep into the body of living organism and sucks the blood. और blood suck करता है. Blood is its food. Next is the tapeworm. Tapeworms are ribbon-like worms. They are the parasite of cattle and sometimes human beings. ये इंसानों के जिस्म में और बाज़ दफ़ा काऊ, बफेलो वगैरह के पेट में पाए जाते हैं. They take the nourishment, ready-made food from their host body. ये अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी के लिए अपने होस्ट में से गिजा निकालते हैं. But they do not give any benefit to their host, but they are mostly harmful for their host. ये ज्यादातर अपनी होस्ट के लिए हार्मफुल है. So tapeworm is endoparasite, leech is exoparasite, Cassitha is exoparasite, Cuscuta is exoparasite. Clear? Now come to the saprotrophic nutrition. Sapro means rotten and trophic means nutrition. Now what happened? Saprotrophic organism or saprotrophs derive their food from dead and decaying organic material. This mode of nutrition is called saprotrophic nutrition. They secrete enzymes that are released on the food material outside their body. These enzymes break down complex food into simple form. Common example of saprotrophs are fungi, that is the mold, mushroom, yeast. Mold, mushroom, yeast, they are fungi, and many bacteria. Now, what are saprotrophic nutrition? It is a type of nutrition in which organisms,
they live on dead host. इनका पैरासाइट में क्या होगा, लिविंग होस्ट होगा, और सेप्रोट्रॉपिक्स में क्या होगा, ऑलवेज देयर होस्ट मस्ट बी अ डेड थिंग, प्लांट डेब्रीज, डेड एनिमल बॉडी और सॉइल, ये सारी चीजों के ऊपर पाए जाते हैं. What they do, they secrete enzyme on the dead bodies, and these enzymes they utilize the, or they break the body, that organism, and they take their nourishment from them. That is why they are called saprotrophic nutrition, that they take their food from rotten material, from dead material. Their host must be dead. Now come to the next, that is the holozoic nutrition. Holo mean whole, zoic mean of animals. In holozoic nutrition, complex organic substances are ingested, that is the taken in, they are taken in without their being degraded or decomposed. After intake, such food is digested by the enzyme produced within the organism. Digested food is absorbed into the body, and the undigested products are egested, that is expelled out from the body. This kind of nutrition is found mainly in non-parasitic animals, simple one like amoeba and the complex like human being. Now, what are they telling here? What are they telling here? Hollow means whole, tamam ke tamam. Zoic means animal. In this type of nutrition, the organism they intake the whole food material. जो भी इंसान या जानवर होलोजिक न्यूट्रिशन करता है, उसमें पूरे की पूरी फूड को एज इट इज दे इनटेक, ये एज इट इज अपने फूड को बॉडी के अंदर ले जाते हैं. Then their body secrete special protein which are called enzyme. अब इनकी बॉडी खास किस्म के एंजाइम प्रोड्यूस करती है, और ये एंजाइम इनको ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है ये एंजाइम. एंड देन when it breaks up into simple substances, they move into their body, or they move into their blood stream. जब ये टूट जाते हैं, सिंपल हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं, डिफ्यूजिबल फॉर्म में आ जाते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में आ जाते हैं, तो आसानी से ब्लड स्ट्रीम में या बॉडी में ये दाखिल हो जाते हैं और उसका हिस्सा बन जाते हैं. Now what about the remaining part which is not digested? अब वो part जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसका क्या होता है? It is expelled out. उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. क्लियर? आप ह्यूमन बीइंग की एग्जाम्पल रखिए. हम कोई भी खाना खाते हैं उसको एज इट इज खाते हैं, ठीक है? गोश्त खा रहे हैं, सालन खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, वो बनी है चाहे हर्ब से बनी है चाहे एनिमल से बनी है, वी टेक एज इट इज. जो भी हमारा तरीका है पकाने का, उस तरीके से हम उसको पका के हम ले लेते हैं. अब ये ग़िज़ा जब हमारे मुंह से गुजरकर हमारी एलिमेंट्री कैनाल तक जाती है, तो बीच में बहुत सारे एंजाइम्स का फंक्शंस आता है. ये एंजाइम सिक्रीशंस करते हैं, और इनकी सिक्रीशन से जो फूड हमने खाई है, ये एंजाइम उसको उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने रोटी खाई है, इफ वी हैव टेकन चपाती, उस चपाती के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है. कार्बोहाइड्रेट में क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ग्रुप. वो उसको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, और वो ग्लूकोज कहलाता है. और वो ग्लूकोज आसानी से ब्लड की वॉल्स में डिफ्यूज हो जाता है और बॉडी का हिस्सा बन जाता है. अब वो पार्ट जो अनडाइजेस्टेड रहा है, रोटी के साथ फाइबर भी जाता है जो अनडाइजेस्टेड होता है, ये चीजें एज इट इज बॉडी से एक्सपेल्ड आउट कर दी जाती है, इजेक्ट कर दी जाती है, बाहर फेंक दी जाती है.
क्लियर? नाउ हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरह से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं. नाउ कम टू द पिक्चर ऑफ अमीबा. दिस इज द अमीबा and this is the small portion of food. Now this amoeba, it will produce false feed around this food and it takes in the food. ये क्या करता है, अपने false feed, this is the pseudopodia false feed, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक इसको लेकर आएगा और it will food will come inside. This food will be digested by the help of enzyme and the remaining portion will be expelled out. Sorry. In the next picture, you can see a paramecium is here. It is a sleeper animal. You are studying this paramecium since the class 6. Am I right? It is a sleeper-like animal. ये एक sleeper-like animal है. You can see there is a pharynx or the mouth-like structure is present. Food particles, when they enter in this portion, you can see there is a canal-like structure. एक tube, एक नाली बनी हुई है. From that tube, the food particles they come inside, and this is called now food vacuole. अब इसको हम food vacuole कहते हैं. जब तक ये खाली होगा तो ये सिर्फ वैक्यूल कहलाता है. जब ये फूड को इनटेक कर लेता है ये फूड वैक्यूल कहलाता है. दिस फूड वैक्यूल्स दे आर simple, they are made diffusible by the action of enzyme and then through this structure. This structure is called contractile vacuole. They are expelled out from the body. Is it clear to all of you? Now, minerals nutrition in the plant. कि plant में minerals का nutrition किस तरीके से होता है? The process involving the absorption, distribution and utilization of mineral substances by the plant for their growth and development is called mineral nutrition. पौधे जमीन से डिफरेंट पानी के साथ साथ डिफरेंट चीजें भी एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें एब्जॉर्ब करते हैं. अब इन चीजों को एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? द रूट हेयर एब्जॉर्ब by the process of diffusion. Now, what is the role of nitrogen? अगर हमारे पास पौधा नाइट्रोजन लेकर आ रहा है तो उसका क्या रोल है? Nitrogen is essential for plant to synthesize amino acids, which are the building block of the protein. Amino acid क्या है? प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है. अब पौधा तो गोश्त खाता नहीं कि उसे प्रोटीन मिल सके, इसलिए जमीन से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और ये नाइट्रोजन उसको प्रोटीन या अमाइनो एसिड सप्लाई करती है. सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, अगर पौधे में डेफिशिएंसी हो जाए, नाइट्रोजन ना हो, तो क्या सिम्टम्स नजर आती है? नाइट्रोजन डेफिशिएंट प्लांट एग्जिबिट स्टंट ग्रोथ, रिड्यूस यील्ड एंड द foliage pale green. You can see here कि पत्ते जो है उनका साइज छोटा हो जाता है और उनका कलर येलो होने लगता है और वो झड़ने लगते हैं. इसी तरह से मैग्नीशियम, many enzymes in plant cells require magnesium in order to perform properly and it is the constituent of the chlorophyll molecule which is the driving force of photosynthesis. यानी जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसके अंदर एक बड़ी अमाउंट मैग्नीशियम की होती है. ये मैग्नीशियम और क्लोरोफिल मिलकर फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं. अगर मैग्नीशियम की शॉर्टेज होगी तो प्लांट जो है वो इस तरह से येलो होना शुरू हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस कम होने की वजह से प्लांट की लाइफ, प्लांट की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी. नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर हम क्या करते हैं कि हम फर्टिलाइजर सप्लाई करते हैं, खाद सप्लाई करते हैं
और उसकी वजह से पौधे जो हैं आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल हैजर्ड्स भी होती हैं जो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ होती हैं जब हम इनको अप्लाई करते हैं। Soil nutrients holding capacity, the massive quantity of inorganic fertilizer affect the soil nutrient holding capacity. Soil जो है एक खास हद तक फर्टिलाइजर को अपने अंदर एब्सॉर्ब रखती है। अगर फर्टिलाइजर ज्यादा हो जाएगी तो ये फर्टिलिटी की इफेक्टेड होगी। यूट्रोट्रॉपिक यूट्रॉफिकेशन क्या है? हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स डिग्रेड इकोसिस्टम। अगर हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का केमिकल का यूज कर रहे हैं तो हमारा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा। इकोसिस्टम हमने फर्स्ट लेसन में बहुत डिटेल में आपको बताया। सॉइल में जो है इमिशन एंड ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। सॉइल की एसिडिटी एंड द अमोनिया गैस may be emitted from the applied inorganic fertilizers. This extra ammonia can be increased soil acidity. सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाएगी, पेस्ट प्रॉब्लम जो है उसके अंदर क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। Now you can see nutrition balance. So the nutrition balance for the plant is required for a healthy growth of plant. Now come to the component of the human food, and then after that we have 5 or 6 minutes left. So thank you for joining. In the beginning I am saying here in the very at the moment I am saying thank you very much for joining the class. अब आपकी एक्चुअल जो है समर वेकेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। अभी तक तो स्कूल आपका बंद था किसी भी रीजन की वजह से, एंड आई होप यू गॉट द समर वेकेशन, सॉरी विंटर वेकेशन। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग समर वेकेशन, आई एम सॉरी फॉर दैट। I hope you have got the winter vacation homework, and this winter vacation homework is very essential for you. You have to do it, आपको इसको करना है, और इसमें हम बाकायदा आपके लिए एक मार्जिन रखेंगे और अगर हमें कोई आगे फॉरवर्ड ये नंबर करने पड़े तो आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे, बेनिफिशियल होंगे। इनको बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा। आपकी जो भी कॉपी स्कूल के अंदर है उनको काइंडली कलेक्ट कर लीजिए। अभी मौजूद हैं, टीचर्स भी मौजूद हैं और कल भी टीचर मौजूद होंगे, इसके बाद टीचर्स मौजूद नहीं होंगे। सो काइंडली कलेक्ट योर कॉपीज। अगर आपकी कॉपीज स्कूल के अंदर हैं तो वो कलेक्ट कर लीजिए। नाउ कम टू द न्यूट्रिशन बैलेंस। ये हो गया पौधे को अगर नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर ये सारी चीजें बैलेंस अमाउंट में चाहिए, उसे इकोसिस्टम भी स्टैब्लिश करता है। नाउ कम टू द कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फीड। हम इसको जल्दी करेंगे क्योंकि हम ये बहुत दफा पढ़ चुके हैं। ह्यूमन फूड के 7 मेजर क्लासेस हैं। नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, फाइबर, विटामिन एंड द वाटर। ये 7 चीजें जो है वो इंसानों की फूड को बनाती है, जिसको हम 1 by 1 पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट्स आर नेसेसरी फॉर योर बॉडी, especially glucose which is primarily source of energy। ग्लूकोज जो है वो क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे हमें फौरन एनर्जी मिलती है। दे आर जनरली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। कार्बोहाइड्रेट के 2 ग्रुप है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट सच एज सक्रोज, जो सादा किस्म के जो डिफ्यूजिबल होते हैं, आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, विच डाइजेस्ट क्विकली। एंड द सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सच एज स्टार्च, जैसे हमारा आटा होता है, आटे के अंदर स्टार्च है, which digest slowly, जो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होते हैं। Sucrose of sources of simple carbohydrate include fruit, sugars and processed grains such as white rice or the flour. You can find complex carbohydrate in green or starchy vegetables, potatoes, whole grains, beans, lentils. The most common and abundant form are sugar, fiber and the starch. There is a picture. You can see these are the common
experiment you have commonly seen. What happens if the carbohydrates are less in amount in our body? If they are going in less amount in our body, then we will become lazy and lethargic. We will be short in the energy हमारे पास कम हो जाएगी. देखिए रमजान में क्या होता है, हम सैरी करते हैं ना, तो सैरी के चंद घंटों तक हम काफी फ्रेश रहते हैं क्योंकि हमने जो कुछ भी हेल्दी खाया होता है वो हमको एनर्जी देता है. लेकिन 2, ढाई, 3 बजे के बाद जो है हम थोड़ा डल होना शुरू हो जाते हैं, हमारी एक्टिविटीज भी शुरू हो जाती है. वाई? बिकॉज द एनर्जी इज यूटिलाइज. जो एनर्जी हमने सुबह सहरी में अफ्तारी में दी थी वो यूटिलाइज हो जाती है और हमारी बॉडी जो है वो वीकनेस की तरफ जाती है. ठीक. नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन. प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डर. ये हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं. प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ यूनिट कॉल्ड द अमाइनो एसिड. प्रोटीन का एक यूनिट जो है वो अमाइनो एसिड कहलाता है. अटैच टुगेदर, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इनसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है जिसको हम प्रोटीन कहते हैं. देयर आर अबाउट 21 अमाइनो एसिड. तकरीबन 20 के करीब अमाइनो एसिड जो है वो कुदरती पाए जाते हैं. प्रोटीन आर complex molecules. The body longer to break them down. बॉडी को इसको ब्रेक करने में टाइम लगता है और ये हमारी बॉडी के हीलिंग में, ग्रोथ में और न्यू सेल की फॉर्मेशन में देती है. ठीक है. ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं. इन प्रोटीन, फिश, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स एंड बीन्स, बनाना, एग एंड दे कंटेन प्रोटीन. ये वो चीजें हैं जिनके अंदर प्रोटीन पाई जाती है. क्लियर? और 20 हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं. द बॉडी सिंथेसाइज सम ऑफ देम फ्रॉम द कंपोनेंट विद इन द बॉडी. कुछ बॉडी में कुदरती तौर पे प्रोड्यूस होते हैं और कुछ हम इनटेक करते हैं. बॉडी को प्रोटीन क्यों चाहिए? क्योंकि ये